Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums,
libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry
will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings
from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts
of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A,
I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well.
The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC,
I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income
A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हेडलाइंस रही अर्थात कौन सब अर्थमंत्री पेड़ी खोली तार पूरा चित्र आम आपको देखा प्रति अपडेट आम आपको देवु। बजेट रे बड़ बड़ सब घोषणा होती क्यों क्षेत्र केते अनुदान होती तार चित्र आम देखा। 12 लाख टंका पर्यंत आयकर छाड़ ए हूँ वर्तमान समय सबुठु बड़ खबर। 12 लाख टंका पर्यंत जदि आपंकर रोजगार रोचे ताहले आपंक कौनसी टिकस पैठ करने पड़ो ना। अर्थात 12 लाख पर्यंत टिकस छाड़ करिसेंती केंद्र सरकार। बजेट रे आयकर को नहीं आसी बड़ घोषणा जहाँ को नहीं तमाम चर्चा होता। 7,75,000 पुराना स्लाब रे रही अर्थात 7,75,000 पर्यंत टिकस देवाई पड़ू ना। ए सीमा को बढ़ाई सरकार। 12 लाख पर्यंत जदि आपंकर रोजगार अच्छी ताहले आपंक कौनसी टिकस पैठ करने पड़ो ना। वर्तमान समय देशवासी सबुठु बड़ खबर कारण बजेट रे आसी ए संक्रांतीय बड़ घोषणा। करदाता मिली बड़ आश्वस्ति। 12 लाख टंका पर्यंत जदि आपंकर आय अच्छी ताहले आपंक कौनसी टिकस पैठ करने पड़ो ना। पूर्व ए संक्रांत में तमाम चर्चा होता समस्त नजर में रही आयकर स्लाब रे सरकार कौन परिवर्तन करेंगे। यारी भितर बड़ खबर आसी कि 12 लाख पर्यंत जदि आपंकर रोजगार अच्छी अर्थात मासकू जदि आपंकर 1,00,000 टंका रोजगार ताहले आपंक कौनसी
टिकस दबा पई पड़िबो नाही। ए होची वर्तमान समय सबुठु बड़ खबर बजेट जहाँ आसुची। निश्चित भाव में वर्तमान समय बजेट को लेकिन समस्त भितर जो उत्साह थिला तो बजेट को नहीं बड़ खबर आसी मासिक 1 लाख आयकारी को टिकस पड़ोनी। अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती अर्थात ये गोटे बड़ घोषणा 12 रु 16 लाख जाए 15% टिकस मिल जहाँ बजेट को नहीं ब्रेकिंग आपण सामने रखुचु सेहीपरि 16 रु 20 लाख जाए 20% रहित आम देखु बजेट रे अर्थमंत्री जो बड़ घोषणा करिसेंती सहित बजेट रे आम देखिलु आहुरी बड़ घोषणा कर विभू कहीं अर्थमंत्री जो बड़ घोषणा करिसेंती कि आयकरदाता जो कथा अनुमान कर जाउतिला ताहा एथर प्रतिफलन देखा मिली। अनेपटे बिहार बड़ घोषणा कर नीतीश को खुशी करने एथर बजेट रे बड़ घोषणा कर बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशर बजेट रे बिहार राज्य बड़ घोषणा करिसेंती। अर्थमंत्री कहिसेंती राज्यर भविष्य को दृष्टि रखी चाहिदा को पूरण करिबा लागि एभली बड़ निष्पत्ति निया जायछि किंतु आयकर स्लैब को लेकिन समस्तंकर जो अपेक्षा थिला 24 लाख रु अधिक आय हेले 30% टिकस देवाक पड़िबो जहां बजेट को नहीं वर्तमान लेटेस्ट खबर आसुची। बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए बड़ घोषणा करिसेंती तो आर भितर 12 लाख टंका जाए आपनको आय कोनोसी इनकम टैक्स देवाक पड़िबो नाही अर्थात 12 लाख टंका पर्यंत आयकर छाड़ नहीं बजेट रे अर्थमंत्री वर्तमान समय बड़ घोषणा करिसेंती। आमे कहि परिबा आयकर दातांको पई ए गोटे खुशीर खबर 12 लाख टंका जाए कोनोसी आयकर देवाक पड़िबो नाही जहां को समस्त अपेक्षा थिला वार्षिक 12 लाख टंका आय जो मानक रही से को टैक्स देवाक पड़ो नहीं 12 रु 16 लाख जाए 15% 15% आप टिकस देवे से 16 रु 20 लाख जाए 20% और 20 रु 24 लाख जो मानक से 25% टिकस देवे बोली अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती। नुआ टिकस व्यवस्था कौन रही केते आपण टिकस देवे से संक्रांतीय समस्त तथ्य आपण मानक सामने राजीव साहू वरिष्ठ चार्टार्ड अकाउंटेंट आम सहित जोड़ुंट श्रीजुक्त साहू आपको स्वागत करुच्ची। जो आशा करा सरकार स्लैब रे परिवर्तन करि पारंती से आशा आमे समस्त देखुचे फलवती होउची प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन रहिबो आपनकर? नहीं मु भाबुची जहां आमे सब एक्सपेक्ट करूथिले मु इंडिविजुअली बहुत खुशी कारण मिडिल क्लास को जो उपेक्षित होइथिले से माने अनेक वर्ष धरी एजा गुटे बहुत बड़ सपोर्ट बहुत बड़ रिकॉग्निशन मिडिल क्लास को एवं जो डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट देखे आमे देखियो पाइलु 7 लाख रु 12 लाख बा लक्षे टंका पर्यंत जार इनकम अच्छी ताकू टैक्स देवा पड़ो नहीं एवं तापर मध्य जो 12 रु 16 लाख 16 रु 20 लाख 20 रु 24 लाख ये जो स्लैब रे मध्य रिडक्शन करागला टैक्स इंपैक्ट कमे दियागला से वर्ष को जने लोक लक्षे रु 2 लाख पर्यंत जो बेनिफिट पाउची सेटा आसीबो जे कंजम्पशन बढ़िया पई मिडिल क्लास हाथ में अधिक सरप्लस रखा एवं जहाँ जहाँ आम आशा करुले बरं ताठू अधिका मिली मु भावुची ए मध्यमित माने निश्चय खुशी रे सालेरीड लोक माने खुशी रे कारण जो एक्सपेक्टेशन थिला से एक्सपेक्टेशन को राजीव साहू आमे जो कथा आलोचना करुथिले होता सरकार मध्यवित्त को खुश करबा पई एभली गोटे बड़ घोषणा करिसंती बोली कहआ जिवो की? निहाती दरकार थिला कारण से माने एटा तांकर हक थिला तांकर न्याय थिला एवं से माने मध्ये एथि पई जेतिकी तांकर कंट्रीब्यूशन थिला सोसाइटी को देश पई वर्तमान देश एवं सरकार तांको सेटा रेसिप्रोकेट करिसंती तेणु एटा निश्चय मु कहबी जे जस्टिस मिडिल क्लास को दिया जायछि एवं जो प्रकार आमे आशा करथुलु से प्रकार बेनिफिट मध्यमित को आसी तेणु आम समस्ते खुशी मध्यमित खुशी रे मु भावी मध्यमित जो खुशी रे से देश खुशी कारण अनेक वर्ष धरी से जीटा बेनिफिट पाइबा कथा पाई नथिले आज किंतु सबू बेनिफिट जो गुड़िक पाई नथिले एवं आगामी दिन एगुड़िक कंपेनसेट होते निश्चय खुशी रहिबे। बिल्कुल एवं निश्चय ए होची बड़ खबर जदि जनकर रोजगार मासिक 1 लाख टंका पर्यंत अच्छी 1 लाख टंका अच्छी ताहेले मध्य से टिकस देबे नाही अर्थात वार्षिक 12 लाख टंका पर्यंत कोनोसी टिकस पैठ करबा पई पड़िबो नाही। एहा बाद मध्य टिकस स्लैब रे अनेक परिवर्तन आसीची कारण पूर्वरु 15 लाख ऊपर जदि रोजगार अच्छी
30% टिकस दवाई पड़ूला जहाँ नहीं चर्चा होता एवं ए स्लाब रे परिवर्तन करा 24 लाख रु जदि अधिक टंका रोजगार अच्छी ताहले 30% टिकस दवाई पड़ो जहाँ नहीं चर्चा करा अनुमान करा बजेट रे तार प्रतिफलन आम देखुचे। श्रीजुक्त राजीव साहू यार प्रभाव जनसाधारण किभली भाव में पड़ो देशर अर्थनीति उपरे केमिति पड़ो एवं केंद्र सरकार किछिटा टिकस आदाय हरई पारंती ए आकलन मध्य करा जाई पारे। देख एटा जो प्रश्न जे एटा साधारण रे निश्चय ग्रहणीय होबो मध्यमित गोटे बड़ सेक्शन से माने एथिरो बेनिफिटेड हेबे जो हैसल थिला जो 12 लाख पर्यंत जो टिकस रिटर्न फाइल करिया कथा सेथिरे मध्य कोल करा जाईची एटा कंजम्पशन बढ़ेबो तेणु सबु वर्गर मध्यमित जो आरंभ करी धनी एवं गरीब लोकों पई एटा गोटे जेतु डिमांड बढ़ौची कंजम्पशन बढ़ौची सेमाने मध्य एथिरु लाभवान हेबे एवं समस्त जेतेबेले खुशी रहिबे समस्तଙ୍କର जेतेबेले प्रोडक्टिविटी बढ़िबो कंट्रीब्यूशन बढ़िबो सेतेबेले देश मध्य खुशी रहिबो एवं जो 1 लाख कोटी टंका सैक्रिफाइस करूचंती सरकार सेटा मोर देन कंपेनसेट हबो अन्य बाटरे कारण तापरे जो जीएसटी जो कंजम्पशन करा जिवो सेथिरो जीएसटी मध्य आदाय करा जिवो इंडस्ट्री माने बेनिफिटेड हेबे सेमाने मध्य अधिक प्रॉफिट करिवे सेमाने मध्य अधिक टिकस देबे तेणु ओवरऑल आपण जदि देखिबे मो भाबुची सरकार खूब माने भलो आकार रे अर्थात श्रीयुक्त राजीव साहू जहाँ सरकार का फोकस थिला लोकन को हाथ रे टंका रहू मध्यवित्त माने केमती उपकृत होई परिबे ताहा एथरो बजेट रे हमें कहि परिबा प्रतिफलन देखिबा को मिलिची। निश्चय भावे सरकार सामग्रिक भावे इनफैक्ट बजेट को जदि देखिबे एटा गोटे बोधे 10 रु 10 मार्क पाइबो एवं ता संगे संगे ए जो डिमांड थिला जे मध्यमित एथिरु किभली उपकृत हेबे एवं सेटा को से माने सरकार खूब भलो भाव रे मध्यमित को रिकॉग्नाइज करूछंती मध्यमित को बेनिफिट मध्य देछंती एवं सेथिरे सामग्रिक भावे अर्थनीति रे गोटे भल परिवर्तन आसीबो गोटे सकारात्मक चिंताधारा रे गोटे सुफलन आमे देखि परिबा तार आउटकम रे ए जो बजेट रे एवं बजेट रे जो प्रावधान रही सेगुड़िक सबू ग्रोथ ओरिएंटेड आमर जेतेबेले विकसित भारत पाई जहाँ जहाँ दरकार बजेट तार प्रतिफलन आप देखुंत तेणु निश्चय स्वागत करेंगे एवं बजेट रु बड़ खबर आसूची टिकस व्यवस्था रे आमे देखुचे एक बड़ परिवर्तन करा जायछि स्लैब रे परिवर्तन करा जायछि एवं ए संक्रांत रे अर्थमंत्री मध्य घोषणा करिसंती। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त राजीव साहू आपनक प्रतिक्रिया पाई। तेबे दर्शक बंधु देशवासी जो अपेक्षा रही अर्थात मध्यवित्त जो माने टिकस परिसरभुक्त थिले सेमानकर आशा थिला कि स्लैब रे परिवर्तन करि पारंती सरकार एवं तार प्रतिफलन देखुचे बड़ खबर हेउची 12 लाख टंका पर्यंत जदि आपनकर वार्षिक रोजगार अच्छी ताहले कोनोसी टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही। टिकस संक्रांतीय घोषणा समय कौन कहते अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आप शुणी नियंतु। July 2000 tax regime. I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income
A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती एवं ये टैक्स को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती इनकम टैक्स विशेष करके जो माने देखो आयकर दाता पई एक बड़ खबर बोली विभू कह जाय परिबो जेतेबेले देखिबा कि 12 लाख टंका पर्यंत आउ कोनोसी देखिबा कि आयकर दबा को पड़िबो नाही ता सहित बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 12 लाख पर्यंत टैक्स फ्री कर दैछंती मोदी सरकार केवल सतिकी नुहे 12 रु 16 लाख पर्यंत 15% टैक्स दिया जिवो बोली घोषणा कर जायछि 20 रु 24 पर्यंत आय जो रहिछि 25% टैक्स देवा को अर्थमंत्री घोषणा करिसेंती जहां निश्चित भाव में कहि परिबा ये आयकर दातांको पे एक खुशी खबर आनि दैछि। लंबा समय धरी ये चर्चा होउथिला कि टिकस परिमाण रे बा स्लैब रे परिवर्तन करि पारंती एवं तार प्रतिफलन आमे देखुचे आम सहित वरिष्ठ सांबादिक सुभाकर पटनायक रहउचंती तांको ठारु आमे विस्तृत भाव में बुझिबा कि एहार आवश्यकता केते थिला बा स्लैब रे परिवर्तन करिबारो एहा द्वारा जो वर्ग उपकृत हेबे सेमानकर संख्या कोन होई पारे सेमाने किभली भाव में लाभवान हेबे एवं देशर अर्थव्यवस्था को एहा किभली बूस्ट करिवो सुभाकर विस्तृत भाव में बुझांतु आवश्यकता एवं एहार प्रभाव सब कोन पड़िबो साधारण लोकंक उपरे देशर अर्थव्यवस्था उपरे। हाँ विभु एक्चुअली मध्यवित्त वर्ग बहुत दिन दाबी करी आसुले जे तांकर टैक्स कर रिहाती दिया जाऊ जोटा को मोदी सरकार मानिचंती आ सुनिचंती से हिसाब रे से ए वर्ष टैक्स स्लैब रे भी परिवर्तन आनिचंती ए टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रिजिम ये रे मिलिवो ओल्ड टैक्स रिजिम रे मिलिवोनी तो जो माने नुआ टैक्स रिजिम को आपणेबे से माने ही ए कर रिहाती पाइबे एई अनुसार सेमान को 12 लाख जाए टैक्स रिहाती मिलिवो प्लस या सहित 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अच्छी यह 12,75,000 आय पर्यंत सेमान को कर दबा को पड़िबो नहीं याठू अधिक दर आय हेले सेमान को कर दबा पड़िबो या सहित सरकार टैक्स स्लैब रे भी परिवर्तन करचंती जोटा कि 20 रु 30% टैक्स स्लैब रोला ताकू भाग करी 20 रु 25 रु 30% टैक्स स्लैब का तैयारी करचंती गोटे नुआ टैक्स स्लैब करचंती या द्वारा मध्यवित्त श्रेणी रो मध्यवित्त आय वर्ग बहुत परिमाण रे लाभवान हेबे तांको हाथ रे अधिक संचय रहिबो से माने अधिक खर्च करि परिबे। सुधाकर जेतोरे प्रधानमंत्री गत काली मध्य कहिथिले मध्यवित्तक हाथ रे लक्ष्मी रुहंतु मध्यवित्त मानकर क्रय सामर्थ्य रहू अर्थात मध्यवित्तक ऊपर फोकस करा जाई पारे एवं गोटे ये बड़ खबर एवं खुशी खबर आमे बोली बड़ गिफ्ट बोली कह जिवो केथरा बजेट मिलिछि एवं जेतेबेले 12 लाख टंका पर्यंत आय थिले वार्षिक आमे कहि परिबा 80,000 टंका ठी बंचिलानी। हाँ निश्चय एक्चुअली या बहुत दिन है दाबी रही से मुद्रास्फीति इनफ्लेशन बढ़ी दर वृद्धि बढ़ मध्यवित्त पाखे संचय रोना हाथ में पैसा आसुना जहाँ दरमा मिलता सरी जाऊला से बर्तमान यही टैक्स स्लैब वृद्धि द्वारा से किसी संचय रही हाथ खोला कर खर्च करेंगे निश्चित भाव में मध्यवित्त एक बड़ सरकार देय कही हम ओके सुभाकर जमी आम देखुचे बर्तमान नुआ टैक्स रिजिम रे जे माने जाउचंती से माने 12 लाख पर्यंत रोजगार पर्यंत कोनोसी टिकस देबे नाही किंतु ता सहित पुराना टिकस व्यवस्था प्रचलन रहिबो किंतु एई पदक्षेप कुहा जाई पारे कि लोकन को गुटे प्रकार आकर्षित करिवो ए नुआ व्यवस्था रे बा नुआ टिकस प्रणाली रे टिकस पैठ करिवा पई मोटामोटी भाव में कुहा जाई पारे कि लोके धीरे धीरे पुराना व्यवस्था को भूली जिवे एवं नुआ रे एटीसी बा अन्य जे सबुर आवश्यकता थाए तार कोनोसी आवश्यकता रहिबोनी। हाँ निश्चित भाव सरकार चाहते जे समस्ते सरल टैक्स सरलीकरण हो एवं सरल अति सहज टैक्स दे पारंतु से न्यू टैक्स रिजिम व्यवस्था कराई एवं सरकार मध्य चाहते समस्ते ओल्ड टैक्स रिजिम छाड़ी नुआ टैक्स रिजिम नियंतु से केवल नुआ टैक्स रिजिम रे रियाती दिया पुराना टैक्स रिजिम रे कौनसी अधिक जहाँ पूर्व रही अधिक कौन रियाती दि जाऊना तो ये नुआ टैक्स रिजिम बल
12,75,000 टंका पर्यंत सेमानकु कर देबाकू पड़िबनी 75 कारण नुआ टैक्स रिजिम रे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मध्ये अछि। किंतु ता सत्वे जे पुराना व्यवस्था रे जीवा पई चाहूचंती पूर्व भली 80C हो बा शिक्षा लोन हो घर लोन हो ए सब रे ऊपर जे सब सुविधा पाउतिले बा छाड़ पाउतिले ता बलवत्तर रहिबो। हाँ जो मैंने ओल्ड टैक्स रिजिम रे सुविधा नवा चाहूँगी हाउसिंग लोन इंटरेस्ट हो 80C रे 1.5 लाख हो कि स्वास्थ्य बीमा उपरे 50,000 पर्यंत हो कि घर भड़ा उपरे नवा चाहूले रिहाती नवा चाहते से मैंने ओल्ड टैक्स रिजिम थ्रू रे टैक्स फाइल करें तार सुविधा नहीं पारे। सरकार दुईटी याक व्यवस्था रखिंट ओल्ड टैक्स रिजिम एपर्यंत बंद कराई सेटा एबे भी बलवत्तर रही। सुभाकर बड़ कथा होची कि देश रे कर देबारे मध्यवित्तंकर गोटे बड़ योगदान रही एवं ये कहि परिबा सरकार जेतेबेले एबडी बड़ घोषणा करिसंती जहा द्वारा सेमानक भितर गोटे बड़ आश्वस्ति मिलिची काईकिना सरकार चाहिसंती कि लोकंक हाथ रे टंका रहू फଳରେ सेमानकर गोटे क्रय सामर्थ्य मध्य रहिबो एवं जो कथा कुआ जाउतिला कि आयकर छाड़ सीमा 10 लाख टंका पर्यंत बढ़ी पारे किंतु सरकार देखिबा कि ता ठारो आहुरी खुशी बढ़ाई देइसंती तो ये आमा द्वारा भारत रो अर्थनीति आहुरी सुदृढ़ हो बोली कुआ जाई परिबो कि? हाँ निश्चित भाव में या द्वारा अर्थनीति विशेष सुदृढ़ हम कारण लोकों पाखे जो अर्थ आसो से निश्चय भाव किसी नुआ जिनस किनिया चाहिए किसी अलग संचय करेंगे जो उभय माध्यम सरकार को परोक्ष व प्रत्यक्ष भाव में उपकृत हम और देशर विकास हम एन संदेह नहीं द्वारा बहुत अधिक संख्यक मध्यम वर्ग टैक्स फाइलिंग इच्छा प्रकाश कर आमे पूर्व व्यवस्था रे देखिथिले 15 लाख रु जो मानकर अधिक रोजगार थिला सेमानक ऊपर 30% टिकस करा जायथिला एवं से वर्गर लोके आमे देखुथिले अनेक समालोचना मध्य करूथिले तेनु सेमानक पई मध्य आश्वस्ति कारण 24 लाख रु जदी अधिका रोजगार होची ताहले 30% टिकस दबा पई पड़िबो। हाँ 15 रु प्रथम 15 लाख ऊपर 30% थिला से स्लैब टाको भांगी देकरी 15 रु 20 लाख मध्य 20% 24 लाख पई 25% एवं 24 लाख अधिक आय उपर 30% सरकार करचंदी जहाँ एक निश्चित भाव अनेकों को खुशी करेबो कारण यह सेमानकर भी बहुत दाबी थिला जे एते कम आय ऊपर 30% कर देवा निश्चित भाव एक काफी कर थिला सेमानक ता सहित 25% गोटे नुआ स्लैब हैला। हाँ 20 रु 24 लाख नहीं कि गोटे नुआ स्लैब सरकार गठन करचंदी जोटे 25% कर देवा पड़िबो सेमान। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपन विस्तृत सूचना पाई एवं दर्शक बंधु बजेट क्यों सब बड़ दिग बजेट हेडलाइंस कौन आम क्रमान्वय आपको देखाइबा चेष्टा करुचु सरकार कौन सब बड़ पदक्षेप नहीं आम 10टी बड़ दिग बड़ पॉइंट को नहीं आपण सामने बर्तमान उपस्थापन करुचु। निश्चित भाव में 10टी पॉइंट बजेट 10 बड़ पॉइंट बजेट रे आयकर को नहीं बड़ घोषणा करा जायछि ता सहित 12 लाख टंका पर्यंत आयकर सीमा छाड़ करा जायछि ता मासिक देखिबा कि 1 लाख आय ऊपर कोनोसी कर पड़िबोनी 12 रु 10 लाख हमें कहि परिबा बिभु 12 रु 16 लाख आय ऊपर मध्य कर पड़िबो 16 रु 20 लाख रोजगार ऊपर 20% कर देबा पई पड़िबो से भली 20 रु 24 लाख आय पई 25% टिकस ए होची नुआ स्लैब 24 लाख रोजगार ऊपर 30% टिकस निश्चित भाव में आयकर स्लैब रे ये बड़ परिवर्तन करा जायछि समस्त को नजर थिला सेपरि घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण होची बजेट रे 10टी बड़ कथा आज संसद रे उपस्थापन होची केंद्र बजेट 2025-26 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अष्टम थर पई संसद रे बजेट उपस्थापन करिसेंती तेबे बड़ कथा होची बजेट रे इनकम टैक्स को नै बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री 12 लाख टंका पर्यंत टैक्स छाड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री कैपिटल गेन छड़ा अन्य आय 12 लाख टंका पर्यंत टिकस छाड़ नै घोषणा करिसेंती कैपिटल गेन थिले 8 रु 12 लाख पर्यंत आयकर 10% रहिबो सेहीपरि 12 रु 16 लाख पर्यंत आय पई 15% आपण टिकस देबे सेहीपरि 16 लाख रु 20 लाख पर्यंत आय पई 20% 20 रु 24 लाख पई आय पई 25% एवं 24 लाख रु अधिक आय पई टिकस 30% आपण देबा पड़िबो अनेपटे 12 लाख टंका पर्यंत आय थिले आपण भाबंतु वार्षिक आपनकु 80,000 टंका एठी बंची जिवो सेहीपरि 18 लाख पर्यंत आय थिले आपनकु वार्षिक 70,000 टंका पर बंचिबो 25 लाख पर्यंत आपनकर जदी
इनकम रोची वर्ष को आपनकर 1.25 लाख अर्थात 1,25,000 टंका आपण सेव करि परिबे जहा द्वारा ये मध्यवित्त वर्ग को खुश करबा पई बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री जहा द्वारा मध्यवित्तंकर जीवन धारण आहुरी कहि परिबो सुदृढ़ हेबो। बिल्कुल एवं मासकू जदि आपनकर रोजगार 1,00,000 टंका अछि ताहेले मध्य चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही कारण आपण सरकार को टिकस पैठ करू नाहंती एवं बजेट रे ए संक्रांतीय बड़ घोषणा करा जायछि वार्षिक जदि आपनकर रोजगार 12 लाख टंका ताहेले आपनकू कोनोसी टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही। पूर्वरु कोन थिला पूर्वरु 7 लाख टंका पर्यंत आपनकू टिकस दबा पई पड़ु नथिला एहा बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन बाबद रे सरकार 75,000 टंकार रिबेट बा छाड़ देउथिले मोटामोटी भाव में 7,75,000 टंका पर्यंत जार रोजगार रही से कौन टिकस पैठ करू नथिले एवं अनुमान करा जाउथिला सरकार एथिरे वृद्धि करिवे किंतु आशा ठारू मध्य अधिक वृद्धि करिसंती कहले भूल हेबो नाही कारण 12 लाख पर्यंत जदि जार वार्षिक रोजगार अछि ताठारू कौन टिकस नेबे नाही सरकार ए होची वर्तमान समय बड़ खबर। एहा बाद आयकर स्लाब रे मध्य अनेक परिवर्तन करा जायछि कारण 24 लाख रु जार रोजगार जदि अधिक ताहेले से माने 30% टिकस देबे पूर्वरु जहा 15 लाख रही तेणु ताकू नहीं मध्य अनेक आलोचना हेउथिला एवं सरकार पूरा टिकस व्यवस्था रे केमिति जनसाधारण को सुहाइब मध्यवित्त केमिति उपकृत होई पारिबे जो मानकर कम रोजगार रहउछि सेमाने केमिति टिकस परिसर भुक्त न हेबे ता उपरे यथेष्ट गुरुत्व देइछंती से 12 रु 16 लाख आय उपरे 15% टिकस देबा पई पड़िबो अन्यपटे जदि 16 रु 20 लाख रोजगार रही ताहेले 20% 20 रु 24 लाख रोजगार पई 25% एवं आपनकर रोजगार जदि 24 लाख रु अधिक रही ताहेले 30% रु अधिक टिकस देबा पई पड़िबो ए होची नुआ टिकस स्लाब जहां आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन समय घोषणा करिसंती एवं ये बजेट रे मध्यवित्तंक पई ये गोटे खुश खबर हमें कहि परिबा मध्यवित्त को खुश करबा पई बड़ प्रयास हमें करा जायछि एवं बड़ आश्वस्ति आसी जायछि बोली कह जाय परिबो काहेकि ना प्रधानमंत्री को कथारु जणा पडुतिला बजेट रे मध्यवित्तंक पई किछि भल रहिछि किंतु आशा ठारु अधिक देखिबा कि एथर अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसंती बजेट रो जो 10टी बड़ दिग जाहाकु ने हमें चर्चा करूछु प्रकृत रे 20 रु 24 लाख जाय आय पई 25% आपण आनिकी टिकस देबे सेही परि 24 लाख रोजगार ऊपर आपण 30% टैक्स देबे आयकर स्लैब रे बड़ परिवर्तन होईछि एवं समस्तंकर अपेक्षा थिला एथरो कोन प्रकृत रे परिवर्तन होई परे जा घोषणा करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये मध्यवित्त परिवार को बड़ आश्वस्ति अनुछि काहेकि सरकार चाहिचंती लोकन को हाथ रे ठी टंका रहू फल रे सेमानकर जो क्रय करिवार सामर्थ्य बढ़िबो एवं कुआ जाउछि आयकर सीमा पूर्व कुआ गला कि 10 लाख पर्यंत बढ़ी पारे किंतु सरकार एठी 12 लाख पर्यंत पूरा देखिबा कि जेभली पदक्षेप नेइछंती कोनोसी इनकम टैक्स दबा को पड़िबो नाही जो द्वारा कि मध्यवित्त श्रेणी लोके उपकृत हेबे एवं आम भारत अर्थनीति को आखि आगे रखी एभली गोटे बड़ पदक्षेप निया जायछि एवं ता सहित आपण देखंतु धनी गरीब मध्यवित्तक भितर गोटे संतुलन आनिबा को सरकार एठी प्रयास करिसंती एवं विशेष करी मध्यवित्तक खुश करबा पई आयकर स्लैब रे एभली बड़ परिवर्तन आना जायछि। लंबा समय धरी यही चर्चा होता कि सरकार टिकस स्लैब रे परिवर्तन करिपारंती एवं तार प्रतिफलन आम वर्तमान बजेट रे देखीचे कारण पूर्व 7 लाख पर्यंत टिकस छाड़ थिला सेथिरे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन रही एथिरे वृद्धि करिसंती सरकार एवं 12 लाख टंका पर्यंत टिकस छाड़ मासिक जदि रोजगार 1 लाख अच्छी ताहेले कोनोसी चिंता करिवार आवश्यकता नहीं कारण आपण टिकस पैठ करबा पई जाउ नाहंती सेही भली 12 रु 16 लाख पर्यंत 15% 16 रु 20 लाख पर्यंत जदि रोजगार अछि 20% 20 रु 24